Hi everyone, I'm Aditya Sridhar. I am an alumnus of JBIMS. I've scored a 99.99 percentile in the MBA CET. Since the second attempt and the first attempt, both attempts of the CET are out, I am making this video to explain a very big question in students' minds. The question is, अगर faculty exam देती है and top करती है, does that impact students? Now, I'm going to answer this question backed by logic and math. Remember, this is a information video for all the students so that they can understand how the process works. This is not targeted towards any faculty और इसका और कोई भी intention नहीं है. ठीक है. Now, keeping this in mind, I'm going to show you how faculty taking the exam actually affects students. That is the takeaway. That is my opinion based on logic and math. अगर इसमें कोई भी logical flaw है, तो please put it in the comments below. I'll be happy to stand corrected because I want to be better and better, have the complete knowledge to guide students. अगर आप ये वीडियो से सहमत है, मेरे लॉजिक से सहमत है, then please like the video and comment below that you agree, because ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है. Because I've prepared a complete Excel sheet with math so that you can understand this clearly. So काफी मेहनत लगी है. So if you agree, please comment you agree, like the video. If you disagree, you can correct me. I'll be happy if you do that. Two things to understand about the CET to understand this question. Firstly, the normalization. CET ने अपना normalization document public किया है. Normalization across slots नहीं होता है. You are given a percentile based on your performance in your own slot. The formula for which is 100 into number of students जिनका marks आपसे equal है या कम है divided by total number of students. So the first ranker percentile calculation will be 100 into total number of students because he is included in that, because equal to है marks में, equal to or less than you. So first ranker में total number of students by total number of students into 100 होता है, तो first ranker को 100 percentile ही मिलता है. ठीक है. सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज वेरी यूनिक अबाउट सीईटी इज जेबीआईएमएस और सिडनम में बहुत फर्क हो जाएगा रैंक 1 और रैंक 2 कॉलेज में. सिडनम और वेलिंकर में बहुत फर्क आ जाता है रैंक 2 रैंक 3 कॉलेज में. नाउ दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी मार्क एंड ईच एंड एवरी डेसिमल पॉइंट रियली मैटर्स इन द सीईटी. ठीक है. इधर इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज बहुत ही चेंज हो जाता है आपका कॉलेज जस्ट बेस्ड ऑन 1% पॉइंट. ठीक है. नाउ लेट्स get into it. Firstly, I've considered 1.2 lakh students taking the CET, which is very close to the real number. Secondly, I've considered an uneven distribution of students. Although CET try करता है evenly distribute करने को, it is not possible exactly कि equal हो, because इक्वल अगर वो अलॉट भी करेंगे तो भी इक्वली स्टूडेंट्स अपीयर नहीं करेंगे. कुछ स्टूडेंट्स तो नहीं आएंगे तो अनइक्वल ही होगा. आई कंसिडर्ड अ लिटिल मोर अनइक्वल देन यूजुअल, बिकॉज अगर मैं अनइक्वल में ये प्रूव कर दूं तो इक्वल में ऑब्वियसली ये होगा. बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 24,000 इन ईच स्लॉट में भी ये वीडियो बना दूंगा इफ देर आर इनफ रिक्वेस्ट इन द कमेंट्स. हैप्पी टू डू दिस ऑन अ यूट्यूब लाइव ऑल्सो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस. ऑल द रिक्वेस्ट कैन बी पुट इन द कमेंट्स. ठीक है. अभी मैंने ये परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया है. स्लॉट 1 27,000 स्टूडेंट्स, स्लॉट 2 18,000, स्लॉट 3 12,000, स्लॉट 4 25,000 एंड स्लॉट 5 38,000. ठीक है. ये बन गया है. नाउ लेट्स कंसिडर कि इनमें से कौन कौन फैकल्टी है रैंडमली. इधर मैंने ये दो लोगों को ले लिया फैकल्टी, इधर मैंने एक को ले लिया, इधर मैंने एक को ले लिया. यहाँ पे रैंक 3 कर दिया ऑलरेडी, तो हम लोग रैंक ये ले लेते हैं. यहाँ पे रैंक 1 को कंसिडर कर लेते हैं, रैंक 5 को कंसिडर कर लेते हैं. चलो ठीक है. ऐसे मैंने क्यों कंसिडर किया कि स्लॉट 1 में 2 है, स्लॉट 2 में 1 है, स्लॉट 3 में 0 है, स्लॉट 4 में 1 है, स्लॉट 5 में 2 है. The reason is that the number of faculty will never be equally distributed, and the reason why is CET self randomly allocate करता है slots.
ठीक है, उनको नहीं पता कौन स्टूडेंट है कौन फैकल्टी है, राइट? व्हेन दे डिस्ट्रीब्यूट इट इवनली, मतलब रैंडमली, तो फैकल्टी तो अनइवनली ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एंड द रीजन फॉर दैट इज द नंबर ऑफ फैकल्टी विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, बिकॉज नंबर ऑफ फैकल्टी कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी हो सकता है, तो 5 हो 10 हो 15, उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, राइट? अगर डिविजिबल बाय 5 है भी, 5 है 10 है 15 भी, वाई डू यू थिंक इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्लॉट्स? 10 है तो हर स्लॉट में 2 फैकल्टी थोड़ी होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कंसिडर देयर 10 फैकल्टी एंड दिस इज अ पीएनसी क्वेश्चन, how, what is the probability that there'll be exactly 2 faculty in each slot? It will be 10C2 for, then for slot 2 you can do 8C2, slot 3 6C2, slot 4 4C2, slot 5 में वो बाकी के दो रहेंगे. You'll also divide by the total number of outcomes, which is 5 par 10, because each faculty has 5 choices basically of going in any slot, right? कोई भी slot में से 5 से लेकर सकते तो उसका 5 raised to 10 आ जाएगा, उसके वजह से it will be the probability will be very very less. I had calculated, I think it was around 1% or something, 1 to 2% के बीच में आता है, so it is very less. So unevenly ही distribute होगा faculty. आप और भी अनइवन ले सकते हो, मतलब स्लॉट 5 में 38 स्टूडेंट मैंने कंसिडर किया है, तो और फैकल्टी ले लो, इधर कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अनइवनली, बेसिकली इट विल बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो दीज आर ऑल आर रैंडम, रैंडम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंस्टॉल्ड, रैंडम फैकल्टी, ठीक है, सब रैंडम ले लिया हम लोग ने. नाउ लेट्स सी हाउ इट अफेक्ट्स स्टूडेंट्स. A very very clear impact on the all India students first of all, and I feel really bad for you all, बिकॉज आप JBIMS में एडमिशन लेने की कोशिश करते हो थ्रू CET, फॉर विच यू हैव टू स्कोर 100 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल. Now, if a faculty takes away that percentile, he is taking away your JBIMS seat. Understand the difference. जब faculty 100 परसेंटाइल लाती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि they are taking away the JBIMS seat, तो किसी को नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा ऑब्वियसली. 50 सीट है तो 50 स्टूडेंट ही JBIMS जा रहा है, कोई फैकल्टी नहीं ले रही है वो सीट, स्टूडेंट्स ही ले रही है. बट वो सीट, इन केस ऑफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, बिकॉज ये टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स नाउ, वो सीट उससे नहीं जाएगी, इट विल गो टू समवन एल्स, इट विल गो टू समवन एल्स इन अनदर स्लॉट, और इट विल गो टू समवन एल्स फ्रॉम CMAT, इट विल गो टू समवन एल्स फ्रॉम अ डिफरेंट एग्जाम. ठीक है. स्लॉट 3 की अगर हम बात करें, तो अगर ऑल इंडिया स्टूडेंट 4, ये वाला ऑल इंडिया स्टूडेंट है, क्या ये वाला ऑल इंडिया स्टूडेंट है, राइट? इसका रैंक दो एक ऊपर होना चाहिए था. ठीक है, इसको आइडियली रैंक 3 आना चाहिए था, इसको 99.99% हला था, इसका JBIMS में एडमिशन हो जाता. ही इज कम्पीटिंग विद CMAT गाइज, अदर गाइज हु ऑलरेडी हैव अ गुड परसेंटाइल, राइट? इसको सीट नहीं मिलेगी, किसी और को मिलेगी. ठीक है. द सेम थिंग ओवर हियर. फोर्थ रैंकर, इफ ही इज एन ऑल इंडिया स्टूडेंट, सॉरी, ये सेकंड रैंकर नहीं होता, आपको 99.99 मिलता, यू वुड हैव गॉटन JBIMS. सेम फॉर स्लॉट 5. इफ द 100 परसेंटाइल वॉजेंट देयर, फिफ्थ ये नहीं था, ये सिक्स रैंकर को फोर्थ रैंक आता, 99.99 आता, एंड उसका JBIMS का सीट मिल जाता. So that is the problem when a faculty takes the exam and tops the exam, for a direct impact on all India students. Maharashtra students पे भी impact होता है, I'll explain in a bit. But all India students, I am really sorry, but if in your slot the 100 percentile and the 99 percentile ये सब is taken, you won't get the seat, someone else will get the seat. ठीक है. So that is the reason. Now I'll just, before going to Maharashtra students, I'll just take a pause and address the all India students first. And the faculty, I don't understand why they take the exam for two reasons. Firstly, तुम्हारे लिए बहुत इजी एग्जाम अटेम्प्ट करना है, नॉट ओनली बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रहे हो या थ्रू आउट, वो तो आप कर ही रहे हो, बट बिकॉज द स्टूडेंट्स आर इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस while टेकिंग द एग्जाम, बिकॉज उनके लिए ये एग्जाम बहुत मैटर करता है. आई रिमेम्बर द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस I was in when I was taking my exam to get into JBIMS. Now when I take the exam, and obviously I don't attempt the paper,
I just mark all flukes and get a 30 percentile or something, and वो percentile obviously कोई एडमिशन नहीं लेता है वो सब परसेंटाइल्स पे, या वो कॉलेज का क्वालिटी एट 30 परसेंटाइल्स, यू नो व्हाट दे आर। आई मार्क ऑल सीज ऑल डेज टू सी कि सीईटी में कुछ बायस है क्या इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस टू गाइड स्टूडेंट्स बेटर। लास्ट टाइम आई मार्क ऑल सी certain percentile, this time I marked all D's, I want to see how much I get। तो स्टूडेंट को ब्लाइंड फ्लू क्या मार्क करना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा कलेक्ट करने के, रिसर्च करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई डू दैट। ऑब्वियसली नाउ व्हेन आई गो टू टेक द एग्जाम, मेरा स्ट्रेस लेवल्स बहुत ही कम रहता है। इट इज वेरी इजी टू डू वेल अंडर नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, एंड व्हेन you're competing with students, obviously it is much easier for you to top the exam। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज मच इजियर फॉर यू। एंड अगर आप कहते हो यू वांट टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न दैट यू कैन डू विदाउट अटेम्प्टिंग द पेपर, यू वांट to show your show how good you are at solving, obviously I know that is a factor in you know a competitive coaching environment, but वो भी आप बाद में कर सकते हो एग्जाम के। हमारे साइट पे या आपके साइट पे देयर विल बी एन ऑप्शन टू टेक पीवाईक्यूज। आप यूट्यूब लाइव करिए, आप वो पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी, वॉट एवर, राइट। You can show that in that way also, so it can be done in other ways। I don't know what exactly you get out of topping the exam, because I just show that all India students पे impact है। and अब वो समझने के लिए let's prepare the merit list together। ठीक है, तो स्लॉट वन को डालते हैं हम मेरिट लिस्ट में। ठीक है, सीईटी का मेरिट लिस्ट ऐसे ही बनता है। परसेंटाइल में टाई होता है तो 12th स्टैंडर्ड परसेंटेज इज कंसिडर्ड अ टाई ब्रेकर। तो जिसका भी 100 परसेंटाइल का 12 परसेंटेज इज हाईएस्ट, दे गेट रैंक 1। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली दे आर फैकल्टी इन दिस लिस्ट, एंड अगेन आई एम सेइंग फैकल्टी आपका सीट नहीं लेती है, ये सीट्स कोई स्टूडेंट ही लेगा। ठीक है, वी कंसिडर्ड 6 फैकल्टी, ये लोग एडमिशन नहीं लेंगे। JBIMS, let's consider one category for now, let's consider open category। 38 सीट्स होते हैं, 38 में 6 लोग नहीं रहेंगे तो 44 तक जाएगा। एंड लेट्स जस्ट कंसिडर एनीथिंग रैंडम, कोई 2 लोग इधर और ये इनको येलो या रेड कर देते हैं, दे आर नॉट टेकिंग एडमिशन फॉर सम ऑफ दी अदर रीजन। 6 लोग फैकल्टी है, 2 लोग एडमिशन नहीं ले रहे, तो 8 लोग हो गए, 38 + 8 46। This student is the last person who will get admission in JBIMS। Now, a few students have just missed out. So 47 has just missed out. These all, a few 5, 6 students have just missed out, right? काफी close ही इनके ranks। Now let's see what happened। Obviously you understand that जो स्लॉट में जितने ज्यादा फैकल्टी उतना आपका नुकसान है, क्योंकि उतना आपका परसेंटाइल नीचे आया है। ठीक है, let's see how slot 3 people have gotten an advantage। Let's look at this guy और गर्ल जो भी है, इसको मिल गया है एडमिशन, ही इज सेलिब्रेटिंग। इसको मिल गया एडमिशन, इसको हो गया सीट ऑफर, बिकॉज 6 लोग फैकल्टी थे, 2 ने एडमिशन नहीं लिया, जो भी हुआ इसको सीट मिल गई है। ये लास्ट पर्सन है सीट गई। स्लॉट 3 में इसमें कोई फैकल्टी नहीं था, इसको आया 99.96। ठीक है, इसको आया है 99.963 और इसका है 99.966, 9.963, 47। इसका देखते हैं केस 99.963, right? This is this guy 159, yes। Now this guy is just missed out by 1 rank। आप समझ रहे हो, उसको एक रैंक से मिला है और 44 ये सब पे एडमिशन मिला है लोगों को। This guy or girl should have actually gotten 3 ranks above। इसकी रैंक 12 आनी चाहिए थी, 99.97 आना चाहिए था इसका। इसको ये पर्सन से पहले एडमिशन मिलना चाहिए था आइडियली, बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, राइट। फैकल्टी नहीं होती तो वही होता, 99.97 आता। इसको ये पर्सन से एडमिशन पहले मिलना चाहिए था, बट नो। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट दिस पर्सन हु डिड नॉट हैव एनी फैकल्टी विल बी ऑफर्ड अ सीट। दिस पर्सन विल नॉट गेट अ सीट। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस पर्सन, 99.9629, 99.9629। ये इसका 2 रैंक ऊपर होना चाहिए, ये भी 99.97 होता। इवन दिस गाय और गर्ल शुड हैव गॉटन एन एडमिशन ऑफर दिस फॉर दिस गाय, बट इसको मिला एडमिशन बिकॉज इसके स्लॉट में फैकल्टी नहीं थी। ये दोनों को मिल सकता था।
इसका देखते हैं, इसने भी मिस किया है ग्रीन स्लॉट 2 में 99.9611। इसका 99.966 हो जाता है, 667। इसका इक्वल हो जाता है इसके तरह, तो इसने मिस आउट किया, बट इट शुड हैव गॉन विद इनटू अ टाई ब्रेकर विद दिस पर्सन आइडियली। एक रैंक तो ऊपर आनी चाहिए थी। तो आप समझ रहे हो, सम पीपल हु हैव जस्ट मिस्ड आउट, these people are going to SIMSREE instead of JBIMS. This person is going to JBIMS from slot 3. The only difference is the number of faculty in their slot, and this is the point I'm trying to make. ठीक है, जेबीएमएस और सिडनम में बहुत फर्क होता है, सिडनम वेलिंकर में बहुत फर्क आ जाता है। लास्ट फ्यू सीट्स में जो आता है फर्क, बिकॉज ऑफ 0.01 परसेंटाइल, बिकॉज ऑफ फैकल्टी टेकिंग द एग्जाम। कौन डिजर्व करता है सीट, आप मेरे को बताइए। डज दिस पर्सन डिजर्व अ सीट ओवर दिस पर्सन? परसेंटाइल इसकी ज्यादा आनी चाहिए थी, अभी इधर फैकल्टी नहीं था तो इसको परसेंटाइल बेटर आया है। आप समझ रहे हो? आई होप यू गेट द पॉइंट। अगेन टू reiterate, not targeting any faculty. This is the explanation of the process. Obviously, it is completely allowed, legal for any faculty to take the exam. Me, Vidhan, Shrikant take the exam, but we don't top the exam. If we don't top the exam, we don't affect all India students. We don't affect Maharashtra students going to JBIMS, Sidnam, Welingkar, all these top colleges. I hope this video was helpful. And again, आप अग्री करते हो, प्लीज लाइक इट, कमेंट दैट यू अग्री, दिस मेक्स लॉजिकल सेंस, ऐसा कुछ कमेंट कीजिए। इफ देयर इज एनी फ्लॉ, you can comment that. I will try to understand your viewpoint. Thank you so much for watching. If you're still here, I will see you